Good morning, students. So, once again, welcome back in Social Science live class for Standard 8. Okay. So, as all of you knows that currently we are discussing in our subject Geography, chapter number 4, Agriculture. Okay. So, yesterday we have discussed on the commercial farming. Okay. So, commercial farming can be divided into three categories. The first category is commercial grain farming. Then the second category is a mixed cropping. What is the second category? The second category is mixed cropping. And then the third category or the third division is what? Plantation. Okay. So overall, the commercial farming can be divided. We can say the division can be done into three categories. Okay. Commercial grain farming, then mixed farming, and the last one is plantation. Okay. So these three things we have discussed in our yesterday's session. Okay, so today we are going to start with a new topic which is being given in our textbook. Okay, so after that explanation of commercial farming, okay, what is given in our syllabus is about the major crops. Okay, so we are going to discuss about the major crops which are grown in different parts of the world and especially in context with India. Okay, as I told you that the same chapter related to agriculture, okay, is there in the syllabus of standard 10 also. ठीक है, ये जो चैप्टर है यही का यही चैप्टर यही सारी चीजें कहाँ पर हैं स्टैंडर्ड 10th में भी हैं. ठीक है, बट सम मोर थिंग्स आर टू बी एडेड अपॉन, है ना. सो हमारे सिलेबस में अभी जो 8th का है इसमें कमर्शियल फार्मिंग के बाद डायरेक्टली वी आर सपोज टू डिस्कस मेजर क्रॉप्स. ठीक है, परंतु इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और चीज है जो आई वांट टू explain you right now, okay, because it is directly related to the standard and certainly related to this chapter. Okay, so इस major crop वाले section से इस major crop वाले section को discuss करने से पहले थोड़ा सा हम उस section को discuss करेंगे which is related to agriculture. Okay, and this is what cropping seasons. Okay, so this that we are supposed to discuss is what beta? Cropping season. ठीक है, अब cropping season का मतलब क्या है? Okay, so cropping season basically means in a 12 month of year, in a 12 month of year, okay, the crops are sown, that is the seeds are sown, and once the crop is ripened, then what happens? The crop is harvested. तो फसल जब पक जाएगी, पकने के बाद में उसको क्या कर लेंगे हम? हार्वेस्टिंग कर लेंगे. ओके, सो फसल लगाना, सीड सोना, सीड लगाना, सीड सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में जो एक टाइम पीरियड है, that is being considered here as a cropping season. यानी अलग अलग फसलों को लगाने का समय कैसा होता है? अलग अलग होता है. What it better? So that is what about the cropping season. ठीक है, so in our country, okay, that is India has three cropping seasons. India has how many cropping seasons beta? 3. So India has 3 cropping seasons. Okay, now what are these?
Rabi, then Kharif, and third one is Zaid. Okay, so the cropping pattern in India can be divided into three cropping seasons. Okay, so what are these three cropping seasons, beta? Rabi season, second is Kharif season, and third one is what? Zaid season. ठीक है, you might have already learned about this one. Okay, very good. Okay, it may be in subject science. Okay, Rabi, it is not Sharif, it is Kharif and Zaid. Okay, so Rabi crops are grown, है ना? Rabi crops are grown in Rabi crops are grown in winter. Rabi crops are grown in winter. Now again, depending upon winter basically means the cooling down of the area. Okay, so cooling down of area basically related to what? The temperature started decreasing. So from North India towards the South India, again the temperature decreases in the different month of the year. Okay, so in case of the Rabi crops, okay, so Rabi crops are grown in winter. Now, in those part of India where the winter season arrives early, जहां पर winter season क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा. Okay, so the Rabi crops are grown in winter from October to December. Okay. Now again it depend on in which part of the country. Again it depend on in which part of the country winter season arrives first. ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि विंटर कहां पर सबसे पहले आया है. Okay, so it completely depend on in which part of the country winter arrives first. Okay, so very clear if the winter arrives first in any part of the country, so सबसे पहले वो अक्टूबर में यदि आ गया, it means they can sow the seeds in October. So जैसे जैसे the winter approaches, the seed sowing may be from October to December. Got it? Okay, and likewise the harvesting is done from April to June. Okay, उसी हिसाब से क्या किया जाएगा? हार्वेस्टिंग किया जाएगा. ठीक है? So that is what about the Rabi crops. Now the second one is Kharif crops. Okay. Now, so what is the specialty in case of the Kharif crops, beta? So Kharif crops are grown with the onset of monsoon. Okay. Kharif crops are grown when the monsoon. Kharif crops are grown when the monsoon arrives. Okay, so Kharif crops are grown when the monsoon arrives. Kharif crop तब ग्रो की जाएगी जब क्या आएगा? मानसून आएगा. Okay, again monsoon means the rainfall is started. Okay, so same is the case of rainy season. In some part of India, the rainy season started early. In other part of India, the rainy season started little bit late. Okay, so accordingly, the crops are or the seeds are sown.
So kharif crops are grown when the monsoon arrives and harvested till September to October. Okay, so kharif crops are grown when the monsoon arrives and harvested till September to October. ठीक है, so खरीफ क्रॉप्स को कब ग्रो करेंगे? When monsoon arrives. मानसून की शुरुआत यानी बारिश शुरू हुई तो सीड सोइंग कर दिया एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जिस हिसाब से सीड सोइंग हुआ है डिपेंडिंग अपॉन when the rainfall start in which particular area, the harvesting done till September to October. Okay, and next is what? Z. Okay, so Z crops are grown. Z crops are grown during summer season. ठीक है, अब जो Z क्रॉप्स है, Z is a cropping season, okay, and which is related to basically what? The summer seasons. Okay, so Z are the crops which are grown in summer season. अब इसमें एक फर्क है बेटा, जो रबी क्रॉप का सीजन है, okay, so for growing rabi crops normally 4 months are available. लगभग 4 महीने का पीरियड रबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है. Then as far as concerned about खरीफ क्रॉप्स, किसके बारे में? खरीफ क्रॉप्स के. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स के लिए हमारे पास लगभग 4 महीने का समय, यानी रबी सीजन और खरीफ सीजन में वो फसलें लगाई जाती हैं जो उस सीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करेंगी, पहली बार, और दूसरा उनको पकने में सीड सोइंग से लेकर राइपनिंग में लगभग कितना टाइम लगता है? 110, 80, 90 टू 120 डेज. ठीक है, गॉट इट. सेम कहानी किसकी है? खरीफ सीजन. ओके, सो अराउंड द सेम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर खरीफ सीजन क्रॉप्स. ठीक है, सो उस समय के यानी उस सीजन के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको सूट करना चाहिए. बट स्पेशल केसेस विद ज़ैड. ओके, तो जब रबी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, यानी रबी की जो फसल है वो काट ली जाती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया द रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में रबी की जो फसल है वो 15 मार्च से कटना शुरू होती है और अप्रैल तक काफी बड़े इलाके में फसल कट जाएगी. अब इसी समय पर क्या आ रहा है? समर सीजन आ रहा है. ठीक है, सो जो फार्मर है वो नेक्स्ट क्रॉप कौन सी? खरीफ क्रॉप का सीड सोइंग करेगा. बट अप्रैल से लेकर के ओके, देन मई एंड जून, 2.5 से 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो खाली टाइम पीरियड मिलता है फार्मर को किस क्रॉप के लिए? ज़ैड क्रॉप के लिए. ओके, सो रबी क्रॉप में लगभग 4 महीने का समय लगेगा, खरीफ क्रॉप में 4 महीने का, और रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में बेटा जस्ट अ मिनट, हाँ आई एम कमिंग. हाँ, वो रेमडिसिविर
ठीक है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन करके मेरे को बताना था, थोड़ा सा मेरा क्लास चल रहा है ना? 11 वही सर प्रीमियर लाइट चलेगा। ब्लू है ना? वो E2 ब्लू। हाँ ठीक, हाँ वही डाल। हाँ ठीक है। चलो कुछ नहीं, उसको नहीं लगवा दूंगा, हम हो गया। So just sorry, I got an urgent call. So that is what the Z crops. Okay. So in case of Z crops, ठीक है? So in case of the Z crops, we have a short timing. Z crops में समय कैसा मिलता है? कम मिलता है। Z crops में समय कैसा मिलेगा? थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली द क्रॉप्स आर ग्रोन। जिस टाइप से समय मिलता है उसी के अकॉर्डिंग क्या ग्रो किया जाएगा? क्रॉप्स आर ग्रोन। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक आउट द चैप्टर ऑल्सो। So in case of Z crops we got less timing, ठीक है? So Z crops के केस में हमें टाइमिंग कैसी मिलेगी बेटा? कम मिलेगी। एंड अकॉर्डिंगली द क्रॉप्स आर ग्रोन। उसी हिसाब से वैसे ही क्या ग्रो की जाती है? क्रॉप्स ग्रो की जाती है। ओके, सो इन Z सीजन, ओके, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो जो जेड सीजन है, जेड सीजन में ऐसी फसलें लगाई जाएंगी विच कुड बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इन अ पीरियड ऑफ 2 और मैक्सिममली 2.5 मंथ। ठीक है, तो जो गर्मी का सीजन होता है उसमें फार्मर क्या लगाते हैं? दे आर ग्रोइंग
watermelon, muskmelon, cucumber, okay. Then they grow vegetables and fodder crops. Got it? All these things are grown by the farmers. ठीक है? तो farmers क्या करते हैं? इन फसलों को ग्रो करते हैं. Got it, beta? Any doubt up to here? Okay. Now this portion is little bit important. Okay, because again it is related to the chapter agriculture. Though the cropping seasons are not given, okay, this year in your syllabus. Got it, beta? But it will come in standard 10 and again related to the chapter also. So just go through all these things, okay? And now we are going to come on our main topic, which is given in our syllabus, okay? And now it is related to what? The major crops, okay? So a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population, okay? There are number of crops which are used as a raw material for the agro-based industries, okay, apart from the food crops. So crops are grown, okay, for the feeding purpose, that is as a food crops, and at the same time crops are also grown. Crops are also grown for as a raw material for the agro-based industries. Okay, so the major food crops means those crops which are being used as a food items are wheat, rice, maize and millets. Whereas the other crops are there, for example, jute, cotton. So jute and cotton are the important crops for fiber industry. Okay, likewise, if there is an indigo crop, it is also used for industries. Okay, then there are some crops which are being used for drinking purpose. Okay, and those crops are called as what? Beverage crops. What are they called? Beverage crops. Okay, so beverage crops basically means the crops which are grown and then they are used for the purpose of drinking. Okay, so we are going to discuss one by one about the important features of these major crops. Okay, so the first crop that we are going to discuss about is rice. Okay, the first crop that we are going to discuss about is rice. The reason is in terms of how many people use a particular crop for the staple diet. Okay, अपने मुख्य भोजन के रूप में कितने लोग अपने मुख्य भोजन के रूप में कितने लोग किस क्रॉप का यूज करते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट राइस इज द लार्जेस्ट डिमांडिंग फूड क्रॉप. यानी दोनों प्रकार की जो क्रॉप्स है उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भोजन कौन यूज करता है? जो कौन सा भोजन यूज होता है? राइस. ओके, सो it is the major food crop. It is the major food crop of the world. ओके, इन्हें संसार की सबसे मेजर फूड क्रॉप कौन सी है? राइस है. ठीक है, इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ people in tropical and subtropical region. ठीक है, it is a staple diet. It is a staple diet of people.
It is a staple diet of people from tropical and okay, it is a staple diet of people from tropical and subtropical regions. ठीक है? So rice is a staple diet of people from tropical and subtropical regions. Okay, so वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है. Now what is tropical region? Tropical region means the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, so in this region, okay, the people have the staple diet as rice. Okay, now it requires, okay, rice requires high temperature. Rice requires high temperature. Okay, now high temperature up to how much? Okay, so rice requires high temperature about 25 degrees Celsius. ओके, राइस को बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है एंड विच रेंज बेटा? अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड rainfall. Okay, so rice require high temperature. How much high? About 25 degrees Celsius. It require high humidity. Okay, high humidity now and rainfall. Okay, so बारिश भी बहुत चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, up to which range? About 25 degree Celsius. ओके, एंड ह्यूमिडिटी. नाउ ह्यूमिडिटी का मतलब इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहां बारिश ना भी हो रही हो तो भी जो एयर है, एयर में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. गॉट इट? दैट टाइप ऑफ सॉइल, it grows best in alluvial clay soil. Okay, so it grows best in alluvial clay soil. ठीक है, it grows best in alluvial clay soil which can retain water. ठीक है, now grows best मतलब आप कहीं भी लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, धान की फसल लग तो जाएगी. लगने का मतलब पौधा उग आएगा खेत में, बट ग्रोस बेस्ट मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्शन राइस का उस प्रकार की मिट्टी में होगा विच इज व्हाट? एलुवियल क्लेई सॉइल. क्ले मतलब उसमें बारीक मिट्टी बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, एलुवियल मींस बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन चाहिए. ओके, व्हाई? बिकॉज दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन रिटेन वाटर. क्योंकि इस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें वाटर हमेशा एब्जॉर्ब रहता है और पानी जमा रहेगा तो ही क्या होगी? राइस की फसल ग्रो करती रहेगी, प्रॉपरली डेवलप होगा. चावल के दाने जितने बड़े होना चाहिए उतने बड़े होंगे, जितने पकने चाहिए उतने पकेंगे.
Okay, now in case of, okay, so West Bengal, now in our country, West Bengal and Odisha have best suitable condition. Okay, West Bengal and Odisha have best suitable climatic conditions. So West Bengal and Odisha have best suitable climatic conditions. Therefore, these states, therefore, these states grow, okay, 3 crops in a year. Okay, so in our country, okay, West Bengal and Odisha. In India, West Bengal and Odisha have best suitable climatic conditions. ठीक है, सो जो राइस की क्रॉप है, राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी और सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस कहां पर है? इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. ओके, तो वर्ल्ड के बाकी के हिस्सों में साल में 1 या 2 बार ही किसकी फसल ग्रो की जाती है? राइस की. इंडिया में इन रिमेनिंग स्टेट्स, ओके, वी आर हैविंग ओनली 1 क्रॉप इन अ ईयर फॉर राइस. चावल की खेती साल में कितनी बार? 1 बार करते हैं. ठीक है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. ठीक है, यहां पर साल में 1 बार राइस की फसल लगाई जाएगी. बट इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में इसी फसल के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं एंड दे हैव द वेरी गुड क्वालिटी सॉइल. मिट्टी भी बहुत अच्छी है, इसलिए वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साल में 3 बार राइस की फसल ली जाती है. ओके, सो दैट्स ऑल एज फार एज कंसर्न अबाउट राइस. ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, यदि मैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में बात करूं, है ना, किसमें बात करूं? क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में. ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, राइट द मेन फीचर्स ऑफ, राइट द मेन फीचर्स ऑफ, राइट द मेन फीचर्स ऑफ राइस. ठीक है, सृष्टि आसवले, please check what have you written. Okay, so rice is the major food crop of the world. It is a staple diet of people from tropical and subtropical region. Then rice require high temperature, about 25 degrees Celsius, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. Okay, now the remaining many states of India and in many parts of the world, people are growing only 1 crop of rice in a year. But in West Bengal and Odisha, because of the suitable climatic conditions, okay, these states grows 3 crops in a year. Got it? Okay. Now, then the next crop, which is the important one, is a wheat. Okay. I am not writing it on the board because now that for rest of the crops a very small description is given. Okay. So just I will explain it and later on you please read in your textbook. Okay. So as far as concerned about wheat, now wheat required moderate temperature and rainfall during the growing season. मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम. तो बीज लगाने से लेकर यानी सीड सोइंग से लेकर ग्रोइंग टाइम तक, जब तक कि
पौधा उगेगा, पौधा बड़ा होगा, उसमें फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग के बाद में फ्रूट बेयरिंग होगा, ठीक है, फ्रूट ग्रो होगा अप टू द रिक्वायर्ड साइज। ओके, सो जो उसका ग्रोइंग सीजन है, सो ग्रोइंग सीजन के टाइम पीरियड पर वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है बेटा। एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी जब दाना पक करके फसल में तैयार हो गया, एट दैट टाइम इट रिक्वायर्ड ब्राइट सनशाइन। यानी ब्राइट सनशाइन मतलब अब बादल नहीं होना चाहिए और क्या होगा, तेज गर्मी पड़ना चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट वीट रिक्वायर ब्राइट सनशाइन। ओके, नाउ इन विच टाइप ऑफ सॉइल, in which type of soil it grows best. Okay, so wheat grows best in well drained loamy soil. now loamy का मतलब उसमें मिट्टी के बारीक कण होने चाहिए, well drained मतलब परंतु वो जो जमीन है उसमें पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी ठहरा मतलब बिल्कुल 100% प्लेन जमीन होगी कि आपने फसल में इरिगेशन किया, पानी दिया और पानी वहीं भरा हुआ रहा तो फसल खराब हो जाएगी। ओके, सो इस टाइप की सॉइल होना चाहिए विच इज वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। ओके, wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India, ठीक है। now in case of India wheat is grown during the winter season। इंडिया में wheat हम कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में। ओके बेटा, so just now it is around 38 minutes, okay, 10:52. The next teacher is supposed to start his class just after 8 to 10 minutes. Okay, so just we are now required to wind up the today's session and tomorrow we'll continue with this one. Okay, and we hope that not much portion is left, so we'll be able to cover it in 3 or 4 more live classes. Okay, so that's all for today. Thank you students, goodbye.